हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है RtCater किचन में। हाय गाइस, वेलकम टू RtCater चैनल। आई एम गोइंग टू मेक टुडे तंदूरी चिकन विद पुलाव राइस। सो आज मैं बनाने जा रहा हूँ तंदूरी चिकन जो हम पुलाव राइस के साथ हम खा सकते हैं। तो आप तंदूरी चिकन के मैरिनेट करने के लिए आप ले लीजिए करीबन मैंने यहाँ पे लिया है 4 चिकन लेग्स जो स्किन ऑफ किया हुआ है। सो आई गॉट हियर 4 चिकन लेग्स without skin. So you can get how many you want. Depends on how many number of people you having. And so I'm just giving little cut on the thighs and drumstick. ये तंदूरी चिकन के लिए अदरक और गार्लिक का पेस्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, और फ्रेश कोरिएंडर, chopped coriander. So this is ginger and garlic paste. I have already pasted, and also I got chopped fresh coriander. So मैंने यहाँ पे अभी तैयार कर रखा है। और and also we need the yogurt, natural yogurt. I'm going to add, and for color you need the little orange color. So orange color के लिए थोड़ा सा हमें orange color चाहिए, and I have got some spices here, so I'm going to add in there. अभी मैं चिकन को एक क्लीन बाउल में डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लीन बाउल में चिकन डालने के बाद आप अदरक लहसुन को डाल सकते। So after you add the chicken legs in the clean bowl, you can add the ginger and garlic paste into it. And also, so I need about 2-3 good tablespoons of natural yogurt. So I have added 3 good tablespoons of natural yogurt and coriander, fresh coriander, chopped coriander. And अभी मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट और दही और फ्रेश कोरिएंडर यहाँ पे डाला है, और इसमें हम डालेंगे देन थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, और 1 teaspoon coriander powder, and 1 teaspoon cumin powder, and 1 teaspoon chili powder, and about 1 teaspoon of salt, or a little bit more, about 1 tablespoon oil. So अभी लगभग 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल में डाल रहा हूँ। और मैं डालने जा रहा हूँ यहाँ पे अभी ये कलर थोड़ा सा ऑरेंज कलर आने के लिए। So this is orange color. So I'm putting to give a nice orange color. So this is for tandoori chicken, for नाइस तंदूरी चिकन। और अभी मैं डालने जा रहा हूँ एक लेमन को मैं काट कर, इसका भी मैं जूस, सो हाफ लेमन, जूस ऑफ हाफ लेमन। अब ये सारा जो इंग्रेडिएंट्स है इस बॉल के अंदर चिकन के साथ मैंने मिला लिया है। सो all the ingredients inside the bowl now, and I have mixed it, and you can see it's lovely marinating chicken, tandoori chicken. So we're going to enjoy with the pulao rice. So अभी इसको करीबन, अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट रख सकते हैं. If you have got time, so you can marinate
day before. If not, couple of hours, that would work very well too. So अभी मैं क्लीन फिल्म लेकर इसको क्लीन फिल्म से ढककर इसको मैं फ्रीज में रखता हूँ. So I'm going to put in the freeze for at least couple of hours to marinate in the sauce. अभी मैं पुलाव के लिए तैयार कर रहा हूँ एक मीडियम साइज सॉस पैन. मैंने लिया है यहाँ पे ग्रीन कार्डमन, बे लीव्स और ये लौंग जो क्लोव्स, और उसके साथ साथ मेरे पास है यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल. So I got green cardamom, crushed green cardamom, cloves and 2 bay leaves, and soaked rice. So this is a bit of yellow. We put it some color in here, but you can have also white basmati rice. So soaked about half an hour. So in one saucepan I'm going to put some 1 tablespoon of ghee. This is the Indian ghee, clarified butter. यहाँ पे मैंने अभी पैन में एक बड़ा चम्मच घी डाला है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी घी मेल्ट हो रहा है. So this ghee is melting. And in the ghee I'm going to add some cardamom, cloves and bay leaves. So we give little stirring here. हम इसको हिलाएंगे और करीबन 2 मिनट इसको हम फ्राई होने के लिए घी में फ्राई करेंगे. So about 2 minutes I'm frying on the in the ghee. It's nice, lovely ghee, and all the whole spices fragrance is coming out, which is great, lovely. Yeah, अभी अच्छा खुशबू आ रहा है इसका. अब लगभग 2 मिनट ये घी में फ्राई करने के बाद मैं डालने जा रहा हूँ ये मिक्स्ड वेजिटेबल जो हमारे पास. और वेजिटेबल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन यूज़ एनी वेजिटेबल यू वांट. So I'm frying this for about 2 minutes again with the mixed vegetable before I add the rice. अभी मैं राइस डालने से पहले मैं करीबन 2 मिनट इस वेजिटेबल को घी और वो साबुत हमारा जो मैंने साबुत मसाला डाला है उसके साथ हम पकाएंगे. 2 मिनट वेजिटेबल डालने के बाद अभी मैं डालने जा रहा हूँ राइस. After almost about 2 minutes I have fried vegetable in the ghee. Then I'm adding now soaked rice. This is soaked basmati rice. See, you can see this is lovely color. So as I say, you can have just plain white basmati rice. This is, we added a little bit turmeric in the rice to get the nice color. This is very sort of traditional Indian color. So we'll gently mix together and lovely smells coming. Wow. And the color is beautiful, as you see. It's beautiful color. After few minutes
we're cooking in the pan with the mixed vegetables, I'm adding the boiling water into the rice now. So this is 1 cup. 2 cups of boiling water into the saucepan. So अभी मैंने यहाँ पे 2 कप उबाला हुआ पानी डाला है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सीजनिंग, थोड़ा सा शुगर, चीनी, this is little bit of sugar, about half a teaspoon, and salt with the taste, about half a teaspoon salt. So as you can see, this is nice lovely color now. In this point we're going to let the rice cook for in the medium heat about 8 to 10 minutes with lids on. So अभी हमारा ये 10 मिनट के बाद धीमी आंच में पकने के साथ हमारा ये पुलाव राइस रेडी है. आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से पक गया है. So after I have cooked, this is about 10 minutes in the slow cooking, so you can see it's beautifully cooked pulao rice. So this is ready, and we can put the lid back on and you can put it on the side until you need it. करीबन 2-2.5 घंटे ये चिकन मैरिनेट होने के बाद अभी मैं इसको ग्रिल करने जा रहा हूँ. So almost 2.5 hours I marinated this chicken. So I'm going to grill this in the preheated oven grill. If you want, or if you have got, you can use in the summer, this is in the barbecue as you like, and also on the barbecue is very nice. So इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पे अरेंज करेंगे ये ग्रिल के लिए. ये है अभी मैरिनेट किया हुआ चिकन जो ओवन के ग्रिल में जाने के लिए तैयार है. So this is the chicken, marinated chicken. So it's ready to go in the oven. This is preheated oven. About 25 to 30 minutes will grill. This is I'm cooking in the about 290 degrees hot oven grill. So अभी हमारा ये chicken ready हो गया है. So this is my chicken is ready now, and I'm putting on there. मेरा जो राइस है अभी जो मेरा पुलाव राइस ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्लेट किया है, और मैं अभी इस चिकन को यहाँ पे आप इस little bit fresh coriander, chopped fresh coriander, and few sliced of red onion. Mostly Indian has a red onion, and we got lime here, so you can squeeze it when you have it. So this is our tandoori chicken with pulao rice ready.